ओम श्री गणेशाय नमः। अथ श्री पंचमुखी हनुमत कवचम विनियोगः। ओम अस्य श्री पंचमुखी हनुमत कवच स्तोत्रस्य श्रीरामचंद्र ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः। श्रीरामचंद्रो देवता, सीता इति बीजं, हनुमानिति शक्तिः। हनुमत प्रीत्यर्थे जपे विनियोगः। अथ ध्यानम्। वन्दे वानर नारसिंह खगराट् क्रोडाश्ववक्त्रान्वितं दिव्यालङ्करणं त्रिपञ्चनयनं देदीप्यमानं रुचा। हस्ताब्जैरसिखेटपुस्तकसुधा कुम्भाङ्कुशाद्रिमहलं खट्वाङ्गं फणिभूरुहं दशभुजं सर्वारिवीरापहं। श्रीरामदूताय आञ्जनेयाय वायुपुत्राय महाबलाय सीताशोकनिवारणाय महाबलप्रचण्डाय लङ्कापुरी दहनाय फाल्गुनसखाय कोलाहलसकलब्रह्माण्डविश्वरूपाय सप्तसमुद्रान्तराललङ्घिताय पिङ्गलनयनायामितविक्रमाय सूर्यबिम्बफलसेवाधिष्ठितपराक्रमाय सञ्जीवन्या अङ्गदलक्ष्मणमहाकपिसैन्यप्राणदात्रे दशग्रीवविध्वंसनाय रामेष्टाय सीतासहितरामचन्द्रवरप्रसादाय षट्प्रयोगागमपञ्चमुखी हनुमन्मन्त्रजपे विनियोगः। ॐ हरिमर्कटमर्कटाय स्वाहा। ॐ हरिमर्कटमर्कटाय वं 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 वषट् स्वाहा। ॐ हरिमर्कटमर्कटाय फं 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 फट् स्वाहा। ॐ हरिमर्कटमर्कटाय खं 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 मारणाय स्वाहा। ॐ हरिमर्कटमर्कटाय ठं 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 स्तम्भनाय स्वाहा। ॐ हरिमर्कटमर्कटाय डं 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 आकर्षणाय सकलसम्पत्कराय पंचमुखी वीर हनुमते स्वाहा। ॐ ढं 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 कूर्ममूर्तये पंचमुखी हनुमते पारयन्त्रतन्त्रोच्चाटनाय स्वाहा। कं खं गं घं ङं चं छं जं झं यं टं ठं डं ढं णं तं थं दं धं नं पं फं बं भं मं यं रं लं वं शं सं शं हं शं स्वाहा इति दिग्बन्धः। ॐ पूर्वकपिमुखाय पंचमुखी हनुमते ठं 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 सकलशत्रुसंहरणाय स्वाहा। ॐ दक्षिणमुखाय पंचमुखी हनुमते करालवदनाय नरसिंहाय ह्रां 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 सकलभूतप्रेतदमनाय स्वाहा। ॐ पश्चिममुखाय गरुडासनाय पंचमुखी वीर हनुमते मं 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 सकलविषहराय स्वाहा। ॐ उत्तरमुखे आदिवराहाय लं 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 नृसिंहाय नीलकण्ठाय पंचमुखी हनुमते स्वाहा। ॐ अंजनासुताय वायुपुत्राय महाबलाय रामेष्टफाल्गुनसखाय सीताशोकनिवारणाय लक्ष्मणप्राणरक्षकाय कपिसैन्यप्रकाशाय दशग्रीवाभिमानदहनाय श्रीरामचन्द्रवरप्रसादकाय महावीर्याय प्रथमब्रह्माण्डनायकाय पंचमुखी हनुमते भूतप्रेतपिशाच ब्रह्मराक्षस शाकिनी डाकिनी अंतरिक्षगृह परयंत्र परतंत्र सर्वग्रहोच्चाटनाय सकलशत्रुसंहरणाय पंचमुखी हनुमद्वरप्रसादाय सर्वरक्षकाय जं 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 स्वाहा। पठित्वेदं तु कवचं महान्तं कवचं पठेत्। एकवारं पठे नित्यं सर्वशत्रुनिवारणं। द्विवारं तो पठे नित्यं पुत्रपौत्रप्रवर्धनं। त्रिवारं पठते नित्यं सर्वसम्पत्करं परं। चतुर्वारं पठे नित्यं सर्वमर्त्यवशङ्करं। पंचवारं पठे नित्यं सर्वरोगनिवारणं। षड्वारं तो पठे नित्यं सर्वदेववशीकरं। सप्तवारं पठे नित्यं सर्वकामार्थसिद्धिदम्। अष्टवारं पठे नित्यं सर्वसौभाग्यदायकं। नववारं पठे नित्यं सर्वैश्वर्यप्रदायकं।
दशवारं पठेन्नित्यं त्रैलोक्यज्ञानदर्शनम् एकादशं पठेन्नित्यं सर्वसिद्धिं लभेन्नरः कवचं स्मृतिमात्रेण महालक्ष्मीफलप्रदम् तस्माच्च प्रयता भाव्यं कार्यं हनुमतः प्रियम् अथ श्री महाकाल शनि मृत्युंजय स्तोत्रम् अथ ध्यानम् नीलाद्रिशोभाञ्चितदिव्यमूर्तिः खड्गी त्रिदण्डी शरचापहस्तः शम्भुर्महाकाल शनिः पुरारिर् जयत्यशेषासुरनाशकारी विनियोगः ॐ अस्य श्री महाकाल शनि मृत्युंजय स्तोत्र मंत्रस्य पिप्पलादिर्षिरनुष्टुप् छन्दो महाकाल शनिर्देवता शं बीजमायसो शक्तिः कालपुरुषायेति कीलकं ममा कालापमृत्युनिवारणार्थे पाठे विनियोगः ॐ महाकाल शनि मृत्युंजयाय नमः नीलाद्रिशोभाञ्चितदिव्यमूर्तिः खड्गोत्रिदण्डे शरचापहस्तः शम्भुर्महाकाल शनिः पुरारिर् जयत्यशेषासुरनाशकारी मेरुपृष्ठे समासीनं सामरस्ये स्थितं शिवं प्रणम्य शिरसा गौरी पृच्छति स्म जगद्दितां पार्वत्युवाच भगवन् देवदेवेश भक्तानुग्रहकारकम् अल्पमृत्यो विनाशाय यत्त्वया पूर्वसूचितं तदेव त्वं महाबाहो लोकानां हितकारकं तव मूर्ति प्रभेदस्य महाकालस्य साम्प्रतं शनेर्मृत्युञ्जय स्तोत्रं ब्रूहि मे नेत्रजन्मनः अकालमृत्युहरणम् अपमृत्युनिवारणं शनिमन्त्रप्रभेदाये तैर्युक्तं यत्स्तवं शुभं प्रतिनाम चतुर्यन्तं नमोन्तं मनुनायुतां श्रीशङ्कर उवाच नित्ये प्रियतमे गौरी सर्वलोकहिते रते गुह्याद्गुह्यतमं दिव्यं सर्वलोकोपकारकं शनिमृत्युञ्जयस्तोत्रं प्रवक्ष्यामि तवाधुना सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वशत्रुविमर्दनं सर्वरोगप्रशमनं सर्वापद्विनिवारणं शरीरारोग्यकरणं आयुर्वृद्धिकरं नृणां यदि भक्तासि मे गौरी गोपनीयं प्रयत्नतः गोपितं सर्वयतन्त्रेषु तच्छृणुस्व महेश्वरी ऋषिन्यासं करन्यासं देहन्यासं समाचरेत् महोग्रं मूर्ध्नि विन्यस्य मुखे वैवस्वतं न्यसेत् गले तु विन्यसेन् मन्दां बाह्वोर्महाग्रं न्यसेत् हृदयं न्यसेन्महाकालं गुह्ये कृशतनुं न्यसेत् जान्वों तोडुचरं न्यस्य पादयोस्तु शनैश्चरम् एवं न्यासविधि कृत्वा पश्चात्कालात्मनः शनेः न्यासं ध्यानं प्रवक्ष्यामि तनौ शार्वा पठेन्नरः कल्पादियुगभेदाश्च कराङ्गन्यासरूपिणः कालात्मनो न्यसेर्गात्रे मृत्युञ्जय नमोऽस्तु ते मन्वन्तराणि सर्वाणि महाकालस्वरूपिणः भावयेत् प्रतिप्रत्यङ्गे महाकालाय ते नमः भावयेत् प्रभवाद्यब्दान् शीर्षे कालजिते नमः नमस्ते नित्यसेव्याय विन्यसेदयने ब्रुवो सौरगे च नमस्तेस्तु गण्डयोर्विन्यसेत्तदून् श्रावणं भागेत् दक्षिणोर्नमः कृष्णनिभाय च महोग्राय नमो भाद्रं तथा श्रवणयोर्न्यसेत् नमो वै दुर्निरीक्ष्याय चाश्विनं विन्यसेन्मुखे नमो नीलमयूखाय ग्रीवायां कार्तिकं न्यसेत् मार्गशीर्षन्यसेद् बाह्वोर्महारौद्राय ते नमः ऊर्ध्वलोकनिवासाय
पौषं तु हृदये न्यसेत् नमः कालप्रबोधाय माघं वै चोदरे न्यसेत् मन्दगाय नमो मेढे न्यसेद्वार्फाल्गुनं तथा ऊर्वोन्यसेच्चैत्रमासं नमः शिवोऽश्वभावश्च वैशाखं विन्यसेन्द्वान्वोर्नमः संवर्तकाय च जङ्घयोर्भावये ज्येष्ठं भैरवाय नमस्तथा आषाढं पाद्योश्चैव शनगे च नमस्तथा कृष्णपक्षं च क्रूराय नमः आपादमस्तके न्यसेदाशीर्षपादान्ते शुक्लपक्षं ग्रहाय च नयसेन्मूलं पादयोश्च ग्रहाय शनगे नमः नमः सर्वजिते चैव तोयं सर्वाङ्गुलौ न्यसेत् न्यसेद्गुल्फद्वगे विश्वं नमः शुष्कतराय च विष्णुभं भावगे जङ्घो भगे शिष्टतमायते जानोद्वये धनिष्ठां च न्यसेत् कृष्णरुचे नमः ऊरोद्वये वरुणार्न्यसेत् कालभृते नमः पूर्वभाद्रं न्यसेन्मेढे जटाजूटधराय च पृष्ठ उत्तरभाद्रं च करालाय नमस्तथा रेवतीं च न्यसेन्नाभो नमो मन्दचराय च गर्भदेशे न्यसेद्दस्त्रं नमः श्यामतराय च नमो भोगिस्त्रजे नित्यं यमं स्तनयुगे न्यसेत् न्यसेत्कृत्तिकां हृदये नमस्तौलप्रियाय च रोहिणीं भावगे धस्ते नमस्ते खड्गधारिणे मृगं निषद्वामहस्ते त्रिदण्डोल्लसिताय च वन्दे वानरनारसिंह खगराट् क्रोडाश्ववक्त्रान्वितं दिव्यालङ्करणं त्रिपञ्चनयनं देदीप्यमानं रुचा हस्ताब्जैरसिखेटपुस्तकसुधा कुम्भाङ्कुशाद्रिमहलं खट्वाङ्गं फणिभूरुहं दशभुजं सर्वारिवीरापहं श्रीरामदूताय आञ्जनेयाय वायुपुत्राय महाबलाय सीताशोकनिवारणाय महाबलप्रचण्डाय लङ्कापुरी दहनाय फाल्गुनसखाय कोलाहलसकलब्रह्माण्डविश्वरूपाय सप्तसमुद्रान्तराललङ्घिताय पिङ्गलनयनायामितविक्रमाय सूर्यबिम्बफलसेवाधिष्ठितपराक्रमाय सञ्जीवन्या अङ्गदलक्ष्मणमहाकपिसैन्यप्राणदात्रे दशग्रीवविद्वंसनाय रामेष्टाय सीतासहितरामचन्द्रवरप्रसादाय षट्प्रयोगागमपञ्चमुखी हनुमन्मन्त्रजपे विनियोगः ॐ हरिमर्कटमर्कटाय स्वाहा ॐ हरिमर्कटमर्कटाय वं 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 वषट् स्वाहा ॐ हरिमर्कटमर्कटाय फं 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 फट् स्वाहा ॐ हरिमर्कटमर्कटाय खं 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 मारणाय स्वाहा ॐ हरिमर्कटमर्कटाय ठं 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 स्तम्भराय स्वाहा ॐ हरिमर्कटमर्कटाय डं 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 आकर्षणाय सकलसम्पत्कराय पंचमुखी वीर हनुमते स्वाहा ॐ ढं 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 कूर्ममूर्तये पंचमुखी हनुमते पारयन्त्रतन्त्रोच्चाटनाय स्वाहा कं खं गं घं ङं चं छं जं झं यं टं ठं डं ढं णं तं थं दं धं नं पं फं बं भं मं यं रं लं वं शं सं शं हं शं स्वाहा इति दिग्बन्धः ॐ पूर्वकपिमुखाय पंचमुखी हनुमते ठं 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 सकलशत्रुसंहरणाय स्वाहा ॐ दक्षिणमुखाय पंचमुखी हनुमते करालवदनाय नरसिंहाय ह्रां 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 सकलभूतप्रेतदमनाय स्वाहा ॐ पश्चिममुखाय गरुडासनाय पंचमुखी वीर हनुमते मं 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 सकलविषहराय स्वाहा ॐ उत्तरमुखे आदिवराहाय लं 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 नरसिंहाय नीलकण्ठाय पंचमुखी हनुमते स्वाहा
ॐ अञ्जनासुताय वायुपुत्राय महाबलाय रामेष्टफाल्गुनसखाय सीताशोकनिवारणाय लक्ष्मणप्राणरक्षकाय कपिसैन्यप्रकाशाय दशग्रीवाभिमानदहनाय श्रीरामचन्द्रवरप्रसादकाय महावीर्याय प्रथमब्रह्माण्डनायकाय पंचमुखी हनुमते भूतप्रेतपिशाच ब्रह्मराक्षस शाकिनी डाकिनी अंतरिक्षगृह परयंत्र परतंत्र सर्वग्रहोच्चाटनाय सकलशत्रुसंहरणाय पंचमुखी हनुमद्वर प्रसादाय सर्वरक्षकाय जम 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 स्वाहा पठित्वेदं तु कवचं महान्तं कवचं पठेत् एकवारं पठे नित्यं सर्वशत्रुनिवारणं द्विवारं तो पठे नित्यं पुत्रपौत्र प्रवर्धनं त्रिवारं पठते नित्यं सर्वसंपत्करं परं चतुर्वारं पठे नित्यं सर्वमर्त्यवशंकरं पंचवारं पठे नित्यं सर्वरोगनिवारणं षड्वारं तो पठे नित्यं सर्वदेववशीकरं सप्तवारं पठे नित्यं सर्वकामार्थसिद्धिदम् अष्टवारं पठे नित्यं सर्वसौभाग्यदायकं नववारं पठे नित्यं सर्वैश्वर्यप्रदायकं दशवारं पठे नित्यं त्रैलोक्यज्ञानदर्शनम् एकादशं पठे नित्यं सर्वसिद्धिं लभेन्नरः कवचं स्मृतिमात्रेण महालक्ष्मीफलप्रदं तस्माच्च प्रयता भाव्यं कार्यं हनुमतः प्रियम् अथ श्री महाकाल शनि मृत्युंजय स्तोत्रम् अथ ध्यानम् नीलाद्रिशोभाञ्चित दिव्यमूर्तिः खड्गी त्रिदण्डी शरचापहस्तः शम्भुर्महाकाल शनिः पुरारिर् जयत्यशेषासुरनाशकारी विनियोगः ॐ अस्य श्री महाकाल शनि मृत्युंजय स्तोत्र मंत्रस्य पिप्पलादिर्षिरनुष्टुप् छंदो महाकाल शनिर्देवता शं बीजमायसो शक्तिः कालपुरुषायेति कीलकं ममा कालापमृत्युनिवारणार्थे पाठे विनियोगः ॐ महाकाल शनि मृत्युंजयाय नमः नीलाद्रिशोभाञ्चितदिव्यमूर्तिः खड्गोत्रिदण्डे शरचापहस्तः शम्भुर्महाकाल शनिः पुरारिर् जयत्यशेषासुरनाशकारी मेरुपृष्ठे समासीनं सामरस्ये स्थितं शिवं प्रणम्य शिरसा गौरी पृच्छति स्म जगद्दितां पार्वत्युवाच भगवन् देवदेवेश भक्तानुग्रहकारकम् अल्पमृत्यो विनाशाय यत्त्वया पूर्वसूचितं तदेव त्वं महाबाहो लोकानां हितकारकं तव मूर्ति प्रभेदस्य महाकालस्य साम्प्रतं शनेर्मृत्युञ्जयस्तोत्रं ब्रूहि मे नेत्रजन्मनः अकालमृत्युहरणम् अपमृत्युनिवारणं शनिमन्त्रप्रभेदाये तैर्युक्तं यत्स्तवं शुभं प्रतिनाम चतुर्यन्तं नमोन्तं मनुनायुतं श्रीशंकर उवाच नित्ये प्रियतमे गौरी सर्वलोकहिते रते गुह्याद्गुह्यतमं दिव्यं सर्वलोकोपकारकं शनिमृत्युञ्जयस्तोत्रं प्रवक्ष्यामि तवाधुना सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वशत्रुविमर्दनं सर्वरोगप्रशमनं सर्वापद्विनिवारणं शरीरारोग्यकरणं आयुर्वृद्धिकरं नृणां यदि भक्तासि मे गौरी गोपनीयं प्रयत्नतः गोपितं सर्वयतन्त्रेषु तच्छृणुस्व महेश्वरी ऋषिन्यासं करन्यासं देहन्यासं समाचरेत् महोग्रं मूर्ध्नि विन्यस्य मुखे वैवस्वतं न्यसेत् गले तु विन्यसेन् मन्दं बाह्वोर्महाग्रं न्यसेत् हृदयं न्यसेन्महाकालं गुह्ये कृशतनुं न्यसेत् जान्वों तोडुचरं न्यस्य पादयोस्तु शनैश्चरम् एवं न्यासविधि कृत्वा पश्चात् कालात्मनः शनेः न्यासं ध्यानं प्रवक्ष्यामि तनौ शार्वा पठेन्नरः कल्पादियुगभेदाश्च कराङ्गन्यासरूपिणः
कालात्मनो न्यसेद्गात्रे मृत्युञ्जय नमोऽस्तु ते मन्वन्तराणि सर्वाणि महाकालस्वरूपिणः भावयेत् प्रतिप्रत्यङ्गे महाकालाय ते नमः भावयेत् प्रभवाद्यब्दान् शीर्षे कालजिते नमः नमस्ते नित्यसेव्याय विन्यसेदयने भ्रुवो सौरगे च नमस्तेस्तु गण्डयोर्विन्यसेत्तदून् श्रावणं भागेत् दक्षिणोर्नमः कृष्णनिभाय च महोग्राय नमो भाद्रं तथा श्रवणयोर्न्यसेत् नमो वैदुर्निरीक्ष्याय चाश्विनं विन्यसेन्मुखे नमो नीलमयूखाय ग्रीवायां कार्तिकं न्यसेत् मार्गशीर्षन्यसेद् बाह्वोर्महारौद्राय ते नमः ऊर्ध्वलोकनिवासाय पौषं तु हृदये न्यसेत् नमः कालप्रबोधाय माघं वै चोदरे न्यसेत् मन्दगाय नमो मेढे न्यसेद्वार्फाल्गुनं तथा ऊर्वोन्यसेच्चैत्रमासं नमः शिवोष्वभावश्च वैशाखं विन्यसेन्ज्वान्वोर्नमः संवर्तकाय च जङ्घयोर्भावये ज्येष्ठं भैरवाय नमस्तथा आषाढं पाद्योश्चैव शनगे च नमस्तथा कृष्णपक्षं च क्रूराय नमः आपादमस्तके न्यसेदाशीर्षपादान्ते शुक्लपक्षं ग्रहाय च नयसेन्मूलं पादयोश्च ग्रहाय शनगे नमः नमः सर्वजिते चैव तोयं सर्वाङ्गुलौ न्यसेत् न्यसेद्गुल्फद्वगे विश्वं नमः शुष्कतराय च विष्णुभं भावगे जङ्घो भगे शिष्टतमायते जानोद्वये धनिष्ठां च न्यसेत् कृष्णरुचे नमः ऊरोद्वये वरुणार्न्यसेत् कालभृते नमः पूर्वभाद्रं न्यसेन्मेढे जटाजूटधराय च पृष्ठ उत्तरभाद्रं च करालाय नमस्तथा रेवतीं च न्यसेन्नाभो नमो मन्दचराय च गर्भदेशे न्यसेद्दस्त्रं नमः श्यामतराय च नमो भोगिस्त्रजे नित्यं यमं स्तनयुगे न्यसेत् कृत्तिकां हृदये नमस्तौलप्रियाय च रोहिणीं भावगे धस्ते नमस्ते खड्गधारिणे मृगं निषद्वामहस्ते त्रिदण्डोल्लसिताय च वन्दे वानरनारसिंह खगराट् क्रोडाश्ववक्त्रान्वितं दिव्यालङ्करणं त्रिपञ्चनयनं देदीप्यमानं रुचा हस्ताब्जैरसिखेटपुस्तकसुधा कुम्भाङ्कुशाद्रिमहलं खट्वाङ्गं फणिभूरुहं दशभुजं सर्वारिवीरापहं श्रीरामदूताय आञ्जनेयाय वायुपुत्राय महाबलाय सीताशोकनिवारणाय महाबलप्रचण्डाय लङ्कापुरी दहनाय फाल्गुनसखाय कोलाहलसकलब्रह्माण्डविश्वरूपाय सप्तसमुद्रान्तराललङ्घिताय पिङ्गलनयनायामितविक्रमाय सूर्यबिम्बफलसेवाधिष्ठितपराक्रमाय सञ्जीवन्या अङ्गदलक्ष्मणमहाकपिसैन्यप्राणदात्रे दशग्रीवविध्वंसनाय रामेष्टाय सीतासहितरामचन्द्रवरप्रसादाय षट्प्रयोगागमपञ्चमुखी हनुमन्मन्त्रजपे विनियोगः ॐ हरिमर्कटमर्कटाय स्वाहा ॐ हरिमर्कटमर्कटाय वं 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 वषट् स्वाहा ॐ हरिमर्कटमर्कटाय फं 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 फट् स्वाहा ॐ हरिमर्कटमर्कटाय खं 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 मारणाय स्वाहा ॐ हरिमर्कटमर्कटाय ठं 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 स्तम्भराय स्वाहा ॐ हरिमर्कटमर्कटाय डं 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 आकर्षणाय सकलसम्पत्कराय पंचमुखी वीर हनुमते स्वाहा ॐ ढं 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 कूर्ममूर्तये पंचमुखी हनुमते पारयन्त्रतन्त्रोच्चाटनाय स्वाहा कं खं गं घं ङं चं छं जं छं यं टं ठं डं ढं णं तं थं दं धं नं पं फं बं भं मं यं रं लं वं शं सं शं हं शं स्वाहा इति दिग्बन्धः
ॐ पूर्वकपिमुखाय पंचमुखी हनुमते ठम 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 सकलशत्रुसंहरणाय स्वाहा। ॐ दक्षिणमुखाय पंचमुखी हनुमते करालवदनाय नरसिंहाय ह्रां 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 सकलभूतप्रेतदमनाय स्वाहा। ॐ पश्चिममुखाय गरुडासनाय पंचमुखी वीर हनुमते मम 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 सकलविषहराय स्वाहा। ॐ उत्तरमुखे आदिवराहाय लं 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 नरसिंहाय नीलकंठाय पंचमुखी हनुमते स्वाहा। ॐ अंजनासुताय वायुपुत्राय महाबलाय रामेष्टफाल्गुनसखाय सीताशोकनिवारणाय लक्ष्मणप्राणरक्षकाय कपिसैन्यप्रकाशाय दशग्रीवाभिमानदहनाय श्रीरामचन्द्रवरप्रसादकाय महावीर्याय प्रथमब्रह्माण्डनायकाय पंचमुखी हनुमते भूतप्रेत पिशाच ब्रह्मराक्षस शाकिनी डाकिनी अंतरिक्षगृह परयंत्र परतंत्र सर्वग्रहोच्चाटनाय सकलशत्रुसंहरणाय पंचमुखी हनुमद्वर प्रसादाय सर्वरक्षकाय जम 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 स्वाहा। पठित्वेदं तु कवचं महान्तं कवचं पठेत् एकवारं पठे नित्यं सर्वशत्रुनिवारणं द्विवारं तो पठे नित्यं पुत्रपौत्र प्रवर्धनं त्रिवारं पठते नित्यं सर्वसंपत्करं परं चतुर्वारं पठे नित्यं सर्वमर्त्यवशंकरं पंचवारं पठे नित्यं सर्वरोगनिवारणं षड्वारं तो पठे नित्यं सर्वदेववशीकरं सप्तवारं पठे नित्यं सर्वकामार्थसिद्धिदम् अष्टवारं पठे नित्यं सर्वसौभाग्यदायकं नववारं पठे नित्यं सर्वैश्वर्यप्रदायकं दशवारं पठे नित्यं त्रैलोक्यज्ञानदर्शनम् एकादशं पठे नित्यं सर्वसिद्धिं लभेन्नरः कवचं स्मृतिमात्रेण महालक्ष्मीफलप्रदं तस्माच्च प्रयता भाव्यं कार्यं हनुमतः प्रियम्। अथ श्री महाकाल शनि मृत्युंजय स्तोत्रम् अथ ध्यानम् नीलाद्रिशोभाञ्चितदिव्यमूर्तिः खड्गी त्रिदण्डी शरचापहस्तः शम्भुर्महाकाल शनिः पुरारिर् जयत्यशेषासुरनाशकारी विनियोगः। ॐ अस्य श्री महाकाल शनि मृत्युंजय स्तोत्र मंत्रस्य पिप्पलादिर्षिरनुष्टुप् छंदो महाकाल शनिर्देवता शं बीजमायसो शक्तिः कालपुरुषायेति कीलकं ममा कालापमृत्युनिवारणार्थे पाठे विनियोगः। ॐ महाकाल शनि मृत्युंजयाय नमः। नीलाद्रिशोभाञ्चितदिव्यमूर्तिः खड्गोत्रिदण्डे शरचापहस्तः शम्भुर्महाकाल शनिः पुरारिर् जयत्यशेषासुरनाशकारी मेरुपृष्ठे समासीनं सामरस्ये स्थितं शिवं प्रणम्य शिरसा गौरी पृच्छति स्म जगद्दितां पार्वत्युवाच भगवन् देवदेवेश भक्तानुग्रहकारकम् अल्पमृत्यो विनाशाय यत्त्वया पूर्वसूचितं तदेव त्वं महाबाहो लोकानां हितकारकम् तव मूर्ति प्रभेदस्य महाकालस्य साम्प्रतं शनिर्मृत्युञ्जय स्तोत्रं ब्रूहि मे नेत्रजन्मनः अकालमृत्युहरणम् अपमृत्युनिवारणं शनिमन्त्रप्रभेदाये तैर्युक्तं यत्स्तवं शुभं प्रतिनाम चतुर्यन्तं नमोन्तं मनुनायुतं। श्रीशंकर उवाच नित्ये प्रियतमे गौरी सर्वलोकहिते रते गुह्याद्गुह्यतमं दिव्यं सर्वलोकोपकारकं शनिमृत्युञ्जयस्तोत्रं प्रवक्ष्यामि तवाधुना सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वशत्रुविमर्दनं सर्वरोगप्रशमनं सर्वापद्विनिवारणं शरीरारोग्यकरणं आयुर्वृद्धिकरं नृणां यदि भक्तासि मे गौरी गोपनीयं प्रयत्नतः गोपितं सर्वयतन्त्रेषु
तच्छृणुस्व महेश्वरी ऋषिन्यासं करन्यासं देहन्यासं समाचरेत् महोग्रं मूर्ध्नि विन्यस्य मुखे वैवस्वतं न्यसेत् गले तु विन्यसेन् मन्दं बाह्वोर्महाग्रं न्यसेत् हृदय न्यसेर्महाकालं गुह्ये कृशतनुं न्यसेत् जान्वों तोडुचरं न्यस्य पादयोस्तु शनैश्चरम् एवं न्यासविधि कृत्वा पश्चात्कालात्मनः शनेः न्यासं ध्यानं प्रवक्ष्यामि तनौ शार्वा पठेन्नरः कल्पादियुगभेदाश्च कराङ्गन्यासरूपिणः कालात्मनो न्यसेर्गात्रे मृत्युञ्जय नमोऽस्तु ते मन्वन्तराणि सर्वाणि महाकालस्वरूपिणः भावयेत् प्रतिप्रत्यङ्गे महाकालाय ते नमः भावयेत् प्रभवाद्यब्दान् शीर्षे कालजिते नमः नमस्ते नित्यसेव्याय विन्यसेदयसे ब्रुवो सौरगे च नमस्तेस्तु गण्डयोर्विन्यसेत्तदून् श्रावणं भागेत् दक्षिणोर्नमः कृष्णनिभाय च महोग्राय नमो भाद्रं तथा श्रवणयोर्न्यसेत् नमो वै दुर्निरीक्ष्याय चाश्विनं विन्यसेन्मुखे नमो नीलमयूखाय ग्रीवायां कार्तिकं न्यसेत् मार्गशीर्षन्यसेद् बाह्वोर्महारौद्राय ते नमः ऊर्ध्वलोकनिवासाय पौषं तु हृदये न्यसेत् नमः कालप्रबोधाय माघं वै चोदरे न्यसेत् मन्दगाय नमो मेढे न्यसेद्वार्फाल्गुनं तथा ऊर्वोन्यसेच्चैत्रमासं नमः शिवोष्वभावश्च वैशाखं विन्यसेन्जान्वोर्नमः संवर्तकाय च जङ्घयोर्भावये ज्येष्ठं भैरवाय नमस्तथा आषाढं पाद्योश्चैव शनगे च नमस्तथा कृष्णपक्षं च क्रूराय नमः आपादमस्तके न्यसेदाशीर्षपादान्ते शुक्लपक्षं ग्रहाय च नयसेन्मूलं पादयोश्च ग्रहाय शनगे नमः नमः सर्वजिते चैव तोयं सर्वाङ्गुलौ न्यसेत् न्यसेद्गुल्फद्वगे विश्वं नमः शुष्कतराय च विष्णुभं भावगे जङ्घो भगे शिष्टतमायते जानोद्वये धनिष्ठां च न्यसेत् कृष्णरुचे नमः ऊरोद्वये वरुणार्न्यसेत् कालभृते नमः पूर्वभाद्रं न्यसेन्मेढे जटाजूटधराय च पृष्ठ उत्तरभाद्रं च करालाय नमस्तथा रेवतीं च न्यसेन्नाभो नमो मन्दचराय च गर्भदेशे न्यसेद्दस्त्रं नमः श्यामतराय च नमो भोगिस्त्रजे नित्यं यमं स्तनयुगे न्यसेत् कृत्तिकां हृदये नमस्तौलप्रियाय च रोहिणीं भावगे धस्ते नमस्ते खड्गधारिणे मृगं निसद्वामहस्ते त्रिदण्डोल्लसिताय च वन्दे वानरनारसिंह खगराट् क्रोडाश्ववक्त्रान्वितं दिव्यालङ्करणं त्रिपञ्चनयनं देदीप्यमानं रुचा हस्ताब्जैरसिखेटपुस्तकसुधा कुम्भाङ्कुशाद्रिमहलं खट्वाङ्गं फणिभूरुहं दशभुजं सर्वारिवीरापहं श्रीरामदूताय आञ्जनेयाय वायुपुत्राय महाबलाय सीताशोकनिवारणाय महाबलप्रचण्डाय लङ्कापुरी दहनाय फाल्गुनसखाय कोलाहलसकलब्रह्माण्डविश्वरूपाय सप्तसमुद्रान्तराललङ्घिताय पिङ्गलनयनायामितविक्रमाय सूर्यबिम्बफलसेवाधिष्ठितपराक्रमाय सञ्जीवन्या अङ्गदलक्ष्मणमहाकपिसैन्यप्राणदात्रे दशग्रीवविध्वंसनाय रामेष्टाय सीतासहितरामचन्द्रवरप्रसादाय षट्प्रयोगागमपञ्चमुखी हनुमन्मन्त्रजपे विनियोगः ॐ हरिमर्कटमर्कटाय स्वाहा ॐ हरिमर्कटमर्कटाय वं 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 वषट् स्वाहा ॐ हरिमर्कटमर्कटाय फं 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 फट् स्वाहा ॐ हरिमर्कटमर्कटाय
खं 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 मारणाय स्वाहा। ओम हरिमर्कटमर्कटाय ठं 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 स्तंभनाय स्वाहा। ओम हरिमर्कटमर्कटाय डं 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 आकर्षणाय सकल संपत्कराय पंचमुखी वीर हनुमते स्वाहा। ओम ढं 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 कूर्ममूर्तये पंचमुखी हनुमते पारयंत्र तंत्रोच्चाटनाय स्वाहा। कं खं गं घं ङं चं छं जं झं यं टं ठं डं ढं णं तं थं दं धं नं पं फं बं भं मं यं रं लं वं शं सं शं हं शं स्वाहा इति दिग्बन्धः। ओम पूर्वकपिमुखाय पंचमुखी हनुमते ठं 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 सकलशत्रुसंहरणाय स्वाहा। ओम दक्षिणमुखाय पंचमुखी हनुमते करालवदनाय नरसिंहाय ह्रां 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 सकलभूतप्रेतदमनाय स्वाहा। ओम पश्चिममुखाय गरुडासनाय पंचमुखी वीर हनुमते मम 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 सकलविषहराय स्वाहा। ओम उत्तरमुखे आदिवराहाय लं 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 नरसिंहाय नीलकंठाय पंचमुखी हनुमते स्वाहा। ओम अंजनासुताय वायुपुत्राय महाबलाय रामेष्टफाल्गुनसखाय सीताशोकनिवारणाय लक्ष्मणप्राणरक्षकाय कपिसैन्यप्रकाशाय दशग्रीवाभिमानदहनाय श्रीरामचन्द्रवरप्रसादकाय महावीर्याय प्रथमब्रह्माण्डनायकाय पंचमुखी हनुमते भूत प्रेत पिशाच ब्रह्म राक्षस शाकिनी डाकिनी अंतरिक्षगृह परयंत्र परतंत्र सर्वग्रहोच्चाटनाय सकल शत्रु संहरणाय पंचमुखी हनुमद्वर प्रसादाय सर्वरक्षकाय जम 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 स्वाहा। पठित्वेदं तु कवचं महान्तं कवचं पठेत् एकवारं पठे नित्यं सर्वशत्रुनिवारणं द्विवारं तो पठे नित्यं पुत्रपौत्र प्रवर्धनं त्रिवारं पठते नित्यं सर्वसंपत्करं परं चतुर्वारं पठे नित्यं सर्वमर्त्यवशंकरं पंचवारं पठे नित्यं सर्वरोगनिवारणं षड्वारं तो पठे नित्यं सर्वदेववशीकरं सप्तवारं पठे नित्यं सर्वकामार्थसिद्धिदम् अष्टवारं पठे नित्यं सर्वसौभाग्यदायकं नववारं पठे नित्यं सर्वैश्वर्यप्रदायकं दशवारं पठे नित्यं त्रैलोक्यज्ञानदर्शनम् एकादशं पठे नित्यं सर्वसिद्धिं लभेन्नरः कवचं स्मृतिमात्रेण महालक्ष्मीफलप्रदं तस्माच्च प्रयता भाव्यं कार्यं हनुमतः प्रियम्। अथ श्री महाकाल शनि मृत्युंजय स्तोत्रम् अथ ध्यानम् नीलाद्रिशोभाञ्चित दिव्यमूर्तिः खड्गी त्रिदण्डी शरचापहस्तः शम्भुर्महाकाल शनिः पुरारिर् जयत्यशेषासुरनाशकारी विनियोगः। ओम अस्य श्री महाकाल शनि मृत्युंजय स्तोत्र मंत्रस्य पिप्पलादिर्षिरनुष्टुप् छंदो महाकाल शनिर्देवता शं बीजमायसो शक्तिः कालपुरुषायेति कीलकं ममा कालापमृत्युनिवारणार्थे पाठे विनियोगः। ओम महाकाल शनि मृत्युंजयाय नमः। नीलाद्रिशोभाञ्चितदिव्यमूर्तिः खड्गोत्रिदण्डे शरचापहस्तः शम्भुर्महाकाल शनिः पुरारिर् जयत्यशेषासुरनाशकारी मेरुपृष्ठे समासीनं सामरस्ये स्थितं शिवं प्रणम्य शिरसा गौरी पृच्छति स्म जगद्दितां पार्वत्युवाच भगवन् देवदेवेश भक्तानुग्रहकारकम् अल्पमृत्यो विनाशाय यत्त्वया पूर्वसूचितं तदेव त्वं महाबाहो लोकानां हितकारकं तव मूर्ति प्रभेदस्य महाकालस्य साम्प्रतं शनेर्मृत्युञ्जय स्तोत्रं ब्रूहि मे नेत्रजन्मनः अकालमृत्युहरणम् अपमृत्युनिवारणं शनिमन्त्रप्रभेदाये
तैर्युक्तं यत्स्तवं शुभं प्रतिनाम चतुर्यन्तं नमोऽन्तं मनुनायुतां। श्रीशंकर उवाच नित्ये प्रियतमे गौरी सर्वलोकहिते रते गुह्याद्गुह्यतमं दिव्यं सर्वलोकोपकारकं शनिमृत्युञ्जयस्तोत्रं प्रवक्ष्यामि तवाधुना। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वशत्रुविमर्दनं सर्वरोगप्रशमनं सर्वापद्विनिवारणं शरीरारोग्यकरणं आयुर्वृद्धिकरं नृणां। यदि भक्तासि मे गौरी गोपनीयं प्रयत्नतः गोपितं सर्वयतन्त्रेषु तच्छृणुस्व महेश्वरी। ऋषिन्यासं करन्यासं देहन्यासं समाचरेत् महोग्रं मूर्ध्नि विन्यस्य मुखे वैवस्वतं न्यसेत्। गले तु विन्यसेन् मन्दं बाह्वोर्मह अग्रं न्यसेत्। हृदि न्यसेन्महाकालं गुह्ये कृशतनुं न्यसेत्। जान्वों तोडुचरं न्यस्य पादयोस्तु शनैश्चरम्। एवं न्यासविधि कृत्वा पश्चात् कालात्मनः शनेः न्यासं ध्यानं प्रवक्ष्यामि तनौ शार्वा पठेन्नरः। कल्पादियुगभेदाश्च कराङ्गन्यासरूपिणः कालात्मनो न्यसेद्गात्रे मृत्युञ्जय नमोऽस्तु ते। मन्वन्तराणि सर्वाणि महाकालस्वरूपिणः भावयेत् प्रतिप्रत्यङ्गे महाकालाय ते नमः। भावयेत् प्रभवाद्यब्दान् शीर्षे कालजिते नमः। नमस्ते नित्यसेव्याय विन्यसेदयने ब्रुवो सौरगे च नमस्तेस्तु गण्डयोर्विन्यसेत्तदून्। श्रावणं भागेत् दक्षिणोर्नमः कृष्णनिभाय च महोग्राय नमो भाद्रं तथा श्रवणयोर्न्यसेत्। नमो वै दुर्निरीक्ष्याय चाश्विनं विन्यसेन्मुखे। नमो नीलमयूखाय ग्रीवायां कार्तिकं न्यसेत्। मार्गशीर्षन्यसेद् बाह्वोर्महारौद्राय ते नमः। ऊर्ध्वलोकनिवासाय पौषं तु हृदये न्यसेत्। नमः कालप्रबोधाय माघं वै चोदरे न्यसेत्। मन्दगाय नमो मेढे न्यसेद्वार्फाल्गुनं तथा ऊर्वोन्यसेच्चैत्रमासं नमः। शिवोऽश्वभावश्च वैशाखं विन्यसेन्ज्वान्वोर्नमः संवर्तकाय च। जङ्घयोर्भावये ज्येष्ठं भैरवाय नमस्तथा। आषाढं पाद्योश्चैव शनगे च नमस्तथा। कृष्णपक्षं च क्रूराय नमः आपादमस्तके। न्यसेदाशीर्षपादान्ते शुक्लपक्षं ग्रहाय च। नयसेन्मूलं पादयोश्च ग्रहाय शनगे नमः। नमः सर्वजिते चैव तोयं सर्वाङ्गुलौ न्यसेत्। न्यसेद्गुल्फद्वगे विश्वं नमः शुष्कतराय च। विष्णुभं भावगे जङ्घो भगे शिष्टतमाय ते। जानुद्वये धनिष्ठां च न्यसेत् कृष्णरुचे नमः। ऊरोद्वये वरुणार्न्यसेत् कालभृते नमः। पूर्वभाद्रं न्यसेन्मेढे जटाजूटधराय च। पृष्ठ उत्तरभाद्रं च करालाय नमस्तथा। रेवतीं च न्यसेन्नाभो नमो मन्दचराय च। गर्भदेशे न्यसेद्दस्त्रं नमः श्यामतराय च। नमो भोगिस्त्रजे नित्यं यमं स्तनयुगे न्यसेत्। न्यसेत्कृत्तिकां हृदये नमस्तौलप्रियाय च। रोहिणीं भावगेद्धस्ते नमस्ते खड्गधारिणे। मृगं निषद्वामहस्ते त्रिदण्डोल्लसिताय च। वन्दे वानरनारसिंह खगराट् क्रोडाश्ववक्त्रान्वितं दिव्यालङ्करणं त्रिपञ्चनयनं देदीप्यमानं रुचां। हस्ताब्जैरसिखेटपुस्तकसुधा कुम्भाङ्कुशाद्रिमहलं खट्वाङ्गं फणिभूरुहं दशभुजं सर्वारिवीरापहं। श्रीरामदूताय आञ्जनेयाय वायुपुत्राय महाबलाय सीताशोकनिवारणाय महाबलप्रचण्डाय लङ्कापुरी दहनाय फाल्गुनसखाय कोलाहलसकलब्रह्माण्डविश्वरूपाय सप्तसमुद्रान्तराललङ्घिताय
पिङ्गलनयनायामित विक्रमाय सूर्यबिम्बफलसेवाधिष्ठितपराक्रमाय सञ्जीवन्या अङ्गदलक्ष्मणमहाकपिसैन्यप्राणदात्रे दशग्रीवविध्वंसनाय रामेष्टाय सीतासहितरामचन्द्रवरप्रसादाय षट्प्रयोगागमपञ्चमुखी हनुमन्मन्त्रजपे विनियोगः। ॐ हरिमर्कटमर्कटाय स्वाहा। ॐ हरिमर्कटमर्कटाय वं 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 वषट् स्वाहा। ॐ हरिमर्कटमर्कटाय फं 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 फट् स्वाहा। ॐ हरिमर्कटमर्कटाय खं 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 मारणाय स्वाहा। ॐ हरिमर्कटमर्कटाय ठं 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 स्तम्भनाय स्वाहा। ॐ हरिमर्कटमर्कटाय डं 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 आकर्षणाय सकलसम्पत्कराय पंचमुखी वीर हनुमते स्वाहा। ॐ ढं 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 कूर्ममूर्तये पंचमुखी हनुमते पारयन्त्रतन्त्रोच्चाटनाय स्वाहा। कं खं गं घं ङं चं छं जं झं यं टं ठं डं ढं णं तं थं दं धं नं पं फं बं भं मं यं रं लं वं शं सं शं हं शं स्वाहा इति दिग्बन्धः। ॐ पूर्वकपिमुखाय पंचमुखी हनुमते ठं 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 सकलशत्रुसंहरणाय स्वाहा। ॐ दक्षिणमुखाय पंचमुखी हनुमते करालवदनाय नरसिंहाय ह्रां 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 सकलभूतप्रेतदमनाय स्वाहा। ॐ पश्चिममुखाय गरुडासनाय पंचमुखी वीर हनुमते मं 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 सकलविषहराय स्वाहा। ॐ उत्तरमुखे आदिवराहाय लं 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 नरसिंहाय नीलकण्ठाय पंचमुखी हनुमते स्वाहा। ॐ अंजनासुताय वायुपुत्राय महाबलाय रामेष्टफाल्गुनसखाय सीताशोकनिवारणाय लक्ष्मणप्राणरक्षकाय कपिसैन्यप्रकाशाय दशग्रीवाभिमानदहनाय श्रीरामचन्द्रवरप्रसादकाय महावीर्याय प्रथमब्रह्माण्डनायकाय पंचमुखी हनुमते भूतप्रेत पिशाच ब्रह्मराक्षस शाकिनी डाकिनी अंतरिक्षगृह परयंत्र परतंत्र सर्वग्रहोच्चाटनाय सकलशत्रुसंहरणाय पंचमुखी हनुमद्वर प्रसादाय सर्वरक्षकाय जम 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 स्वाहा। पठित्वेदं तु कवचं महान्तं कवचं पठेत् एकवारं पठे नित्यं सर्वशत्रुनिवारणं द्विवारं तो पठे नित्यं पुत्रपौत्र प्रवर्धनं त्रिवारं पठते नित्यं सर्वसंपत्करं परं चतुर्वारं पठे नित्यं सर्वमर्त्यवशंकरं पंचवारं पठे नित्यं सर्वरोगनिवारणं षड्वारं तो पठे नित्यं सर्वदेववशीकरं सप्तवारं पठे नित्यं सर्वकामार्थसिद्धिदम् अष्टवारं पठे नित्यं सर्वसौभाग्यदायकं नववारं पठे नित्यं सर्वैश्वर्यप्रदायकं दशवारं पठे नित्यं त्रैलोक्यज्ञानदर्शनम् एकादशं पठे नित्यं सर्वसिद्धिं लभेन्नरः कवचं स्मृतिमात्रेण महालक्ष्मीफलप्रदम् तस्माच्च प्रयता भाव्यं कार्यं हनुमतः प्रियम्। अथ श्री महाकाल शनि मृत्युंजय स्तोत्रम् अथ ध्यानम् नीलाद्रिशोभाञ्चित दिव्यमूर्तिः खड्गी त्रिदण्डी शरचापहस्तः शम्भुर्महाकाल शनिः पुरारिर् जयत्यशेषासुरनाशकारी विनियोगः। ॐ अस्य श्री महाकाल शनि मृत्युंजय स्तोत्र मंत्रस्य पिप्पलादिर्षिरनुष्टुप् छंदो महाकाल शनिर्देवता शं बीजमायसो शक्तिः कालपुरुषायेति कीलकम् ममा कालापमृत्युनिवारणार्थे पाठे विनियोगः। ॐ महाकाल शनि मृत्युंजयाय नमः। नीलाद्रिशोभाञ्चितदिव्यमूर्तिः खड्गोत्रिदण्डे शरचापहस्तः शम्भुर्महाकाल शनिः पुरारिर् जयत्यशेषासुरनाशकारी मेरुपृष्ठे समासीनं
सामरस्ये स्थितं शिवं प्रणम्य शिरसा गौरी पृच्छति स्म जगद्दितां पार्वत्युवाच भगवन् देवदेवेश भक्तानुग्रहकारकम् अल्पमृत्यो विनाशाय यत्त्वया पूर्वसूचितं तदेव त्वं महाबाहो लोकानां हितकारकं तव मूर्ति प्रभेदस्य महाकालस्य साम्प्रतं शनेर्मृत्युञ्जयस्तोत्रं ब्रूहि मे नेत्रजन्मनः अकालमृत्युहरणम् अपमृत्युनिवारणं शनिमन्त्रप्रभेदाये तैर्युक्तं यत्स्तवं शुभं प्रतिनाम चतुर्यन्तं नमोऽन्तं मनुनायुतां श्रीशङ्कर उवाच नित्ये प्रियतमे गौरी सर्वलोकहिते रते गुह्याद्गुह्यतमं दिव्यं सर्वलोकोपकारकं शनिमृत्युञ्जयस्तोत्रं प्रवक्ष्यामि तवाधुना सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वशत्रुविमर्दनं सर्वरोगप्रशमनं सर्वापद्विनिवारणं शरीरारोग्यकरणम् आयुर्वृद्धिकरं नृणां यदि भक्तासि मे गौरी गोपनीयं प्रयत्नतः गोपितं सर्वयतन्त्रेषु तच्छृणुस्व महेश्वरी ऋषिन्यासं करन्यासं देहन्यासं समाचरेत् महोग्रं मूर्ध्नि विन्यस्य मुखे वैवस्वतं न्यसेत् गले तु विन्यसेन् मन्दं बाह्वोर्मह अग्रं न्यसेत् हृदीं न्यसेन्महाकालं गुह्ये कृशतनुं न्यसेत् जान्वों तोडुचरं न्यस्य पादयोस्तु शनैश्चरम् एवं न्यासविधि कृत्वा पश्चात् कालात्मनः शनेः न्यासं ध्यानं प्रवक्ष्यामि तनौ शार्वा पठेन्नरः कल्पादियुगभेदाश्च कराङ्गन्यासरूपिणः कालात्मनो न्यसेद्गात्रे मृत्युञ्जय नमोऽस्तु ते मन्वन्तराणि सर्वाणि महाकालस्वरूपिणः भावयेत् प्रतिप्रत्यङ्गे महाकालाय ते नमः भावयेत् प्रभवाद्यब्दान् शीर्षे कालजिते नमः नमस्ते नित्यसेव्याय विन्यसेदयने भ्रुवो सौरगे च नमस्तेस्तु गण्डयोर्विन्यसेत्तदून् श्रावणं भागेत् दक्षिणोर्नमः कृष्णनिभाय च महोग्राय नमो भाद्रं तथा श्रवणयोर्न्यसेत् नमो वैदुर्निरीक्ष्याय चाश्विनं विन्यसेन्मुखे नमो नीलमयूखाय ग्रीवायां कार्तिकं न्यसेत् मार्गशीर्षन्यसेद् बाह्वोर्महारौद्राय ते नमः ऊर्ध्वलोकनिवासाय पौषं तु हृदये न्यसेत् नमः कालप्रबोधाय माघं वै चोदरे न्यसेत् मन्दगाय नमो मेढे न्यसेद्वार्फाल्गुनं तथा ऊर्वोन्यसेच्चैत्रमासं नमः शिवोऽश्वभावश्च वैशाखं विन्यसेन्ज्वान्वोर्नमः संवर्तकाय च जङ्घयोर्भावये ज्येष्ठं भैरवाय नमस्तथा आषाढं पाद्योश्चैव शनगे च नमस्तथा कृष्णपक्षं च क्रूराय नमः आपादमस्तके न्यसेदाशीर्षपादान्ते शुक्लपक्षं ग्रहाय च नयसेन्मूलं पादयोश्च ग्रहाय शनगे नमः नमः सर्वजिते चैव तोयं सर्वाङ्गुलौ न्यसेत् न्यसेद्गुल्फद्वगे विश्वं नमः शुष्कतराय च विष्णुभं भावगे जङ्घो भगे शिष्टतमायते जानोद्वये धनिष्ठां च न्यसेत् कृष्णरुचे नमः ऊरोद्वये वरुणार्न्यसेत् कालभृते नमः पूर्वभाद्रं न्यसेन्मेढे जटाजूटधराय च पृष्ठ उत्तरभाद्रं च करालाय नमस्तथा रेवतीं च न्यसेन्नाभो नमो मन्दचराय च गर्भदेशे न्यसेद्दस्त्रं नमः श्यामतराय च नमो भोगिस्त्रजे नित्यं यमं स्तनयुगे न्यसेत् कृत्तिकां हृदये नमस्तौलप्रियाय च रोहिणीं भावगे धस्ते नमस्ते खड्गधारिणे मृगं निसद्वामहस्ते त्रिदण्डोल्लसिताय च